So till here we had reached that when we start this we get a false. Now I want to make a table in the database. So I will make one package in my main. I will make a new package. Those are my model classes or entity classes, you can call them. Okay, so entity classes are those classes जिसका टेबल बनेगा डेटाबेस में. So समझो मुझे एक टेबल बनानी है स्टूडेंट के, तो मैं क्या बनाऊंगा, एक क्लास किस नाम से, ठीक है. सो ये इसको जाओ और रिफ्रेश कर लो ताकि ये ऑर्डर्स में आ जाए, सारे कॉलम अलाइन हो जाए. ठीक है, अब ये आ गए. इसमें स्टूडेंट क्लास है. अब क्या क्या आपको एट्रीब्यूट चाहिए आप डाल दो. प्राइवेट इंटीजर रोल नंबर, प्राइवेट स्ट्रिंग एस नेम, प्राइवेट डबल परसेंटेज. ठीक है, और फिर जो भी हमको रिक्वायरमेंट चाहिए होते हैं हम सब लगा देंगे. सो ये क्या है, ऑल आर्ग्स कंस्ट्रक्टर. ये क्या है, नो आर्ग्स कंस्ट्रक्टर, कोई पेरेंट क्लास तो है नहीं. ओके, ये क्या है, सोर्स सेटर गेटर्स. और ये क्या है, सोर्स जनरेट टूस्ट. कोड लिख दिया. ओके, अब जब हम इस कोड को रन करेंगे तो क्या होगा, डेटाबेस में टेबल बन जाएगी किस नाम से, और उसके कॉलम्स क्या बन जाएंगे, रोल नंबर. तो वो हर एक क्लास की टेबल नहीं बनाता है. वो वही क्लास की टेबल बनाएगा जिस क्लास के ऊपर ऐड एंटिटी एनोटेशन होगा. कौन से, और उसको इंपोर्ट करना है जावा एक्स परसिस्टेंट से. कहाँ से करना है, और अगर आपने कोई क्लास बनाया तो प्राइमरी की कंपलसरी है, तो आपको एक कॉलम इसमें से प्राइमरी की चूज करना पड़ेगा. कौन सा, उसको आपको देना पड़ेगा ऐड आईडी एनोटेशन. उसको भी जावा एक्स परसिस्टेंट से लेना. ठीक है, yes. अब आपका क्लास रेडी है. तो वो क्या करेगा, स्कैन करेगा जितने भी क्लासेस को ऐड एंटिटी अनॉट किया है, टेबल उस नाम से बनाएगा. आईडी एट्रीब्यूट कंपलसरी है एंटिटी के अंदर, और इतने कॉलम्स बन जाएंगे. और एक आपको सिर्फ एक काम करना है कि आपने जो टेबल बनाए हैं, जो क्लास एंटिटी क्लास, उसकी नोंदनी को रजिस्टर करना है अपने इस फाइल के अंदर, जो अपना ये है ना CFG फाइल. वैसे नीचे देखो ऐसा करना है. तो एक मैंने सिर्फ कॉपी कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ. सो अपने CFG फाइल में गए, और ये फैक्ट्री के अंदर ही करना है. ठीक है, फुल्ली क्वालिफाइड नेम देना है इसका. फुल्ली क्वालिफाइड नेम क्या है इसका, ये पूरा का पूरा यहाँ पर आपको पेस्ट करना है. ठीक है, अब आपका जब रन करेंगे कोड, रन करने के साथ ही आपकी क्लास बन जाएगा. अभी आपके डेटाबेस में कितने टेबल्स है, कोई टेबल नहीं दिखा, 0 दिख रहा है. रिफ्रेश भी कर लो, अगर मैं रिफ्रेश करने के बाद भी मुझे सिर्फ वो देखो 0 ही दिखा रहा है. अब मैं यहाँ जाता हूँ और अपने इसको रन करता हूँ app.java को. सो you will, okay, so create table command will be executed in the background, right? That command you will see on the console. So behind the scene JDBC चल रहा है, आपको दिख जाएगा कंसोल के ऊपर कि कौन से कमांड एग्जीक्यूट हुए. देखो आपको कंसोल पे कमांड दिख जाएगा. देखा, ये कमांड एग्जीक्यूट हुआ है. अब ये कमांड कैसे दिख रहा है आपको, मल्टीपल लाइन पे दिख रहा है ना. ये चाहो तो हम ऐसा भी दिखा सकते थे, एक सिंगल लाइन पे ऐसा ये टेबल ऐसा भी दिखा सकते हैं हम लोग. बट इसने कैसे दिखाया, हर कॉलम को अलग लाइन पे दिखाया ना, क्योंकि वो ऐसा क्यों दिख रहा है,
वो इसके लिए दिख रहा है क्योंकि हमने सेटिंग जो डाली है CFG फाइल में। ओके, आपको SQL कमांड दिख रही है क्या ब्राउज़र पे, कंसोल पे? वो इसके लिए दिख रही है क्योंकि हमने लिखा है शो SQL ट्रू। क्या लिखा है? और हमने फॉर्मेट SQL भी ट्रू किया है, जिसके वजह से हमको यहाँ पर वो ऐसे दिखा रहा है, वरना वो ऐसे 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 दिखाता था। ठीक है, तो फॉर्मेट SQL फॉल्स करके देखना कैसे दिखाता है क्वेरी। पूरी क्वेरी एक साथ दिखा देगा एक लाइन में। ओके, तो ये वो सेटिंग्स हमने यहाँ की है। अब बचता है ये अपडेट क्या है, बताता हूँ। ठीक है, सो अभी आप जब जाओगे डेटाबेस में और रिफ़्रेश करोगे तो आपकी एक टेबल बन चुकी होंगी क्लास के नाम से, और जितने उसमें प्रॉपर्टीज़ थे उतने कॉलम दिख रहा है, बन गई। और जब इसको देखोगे इसमें क्या क्या है, तो ये कॉलम्स है उसके अंदर। और रोल नंबर जो है प्राइमरी की है, दिख रहा है प्राइमरी की, रोल नंबर। सो ऐसे हमको एंटिटी क्लास बनानी है और उसको कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपको टेबल का नाम चेंज करना है कि सर मुझे टेबल का नाम स्टूडेंट नहीं रखना है, मुझे उसके अंदर रखना है TY स्टूडेंट्स, तो उसके अंदर फिर एक एट्रीब्यूट आता है @table। आप यहाँ पर उसको नेम दे सकते हो इक्वल टू TY स्टूडेंट्स। तो फिर आप चाहो तो कॉलम टेबल का नाम भी चेंज कर सकते हो। जब उसको रन करेंगे तो ये इस नाम से टेबल बना देगा। ठीक है, तो वो आपके ऊपर है। ऐसे ही कॉलम्स के अंदर भी आता है। अगर आपको कॉलम का नाम रोल नंबर पूरा चाहिए तो आप दे सकते हो @कॉलम और फिर नेम इक्वल टू, जो आप यहाँ दोगे वो दे देगा। तो आपको अगर पूरा देना है रोल नंबर, वो भी आप दे सकते हो। ठीक है, अब मैं सेव कर रहा हूँ और अभी जब वापस रन करेंगे एप्लीकेशन को तो उस नाम से टेबल बना देगा। लेट्स राइट क्लिक करते रन करते हैं और देखते हैं क्या होता है। ठीक है, टेबल के नाम से बन गई और कॉलम क्या बन गया, कंफर्म करना है तो आप जाके रिफ़्रेश करके कंफर्म कर सकते हो आपके डेटाबेस में। डेटाबेस को रिफ़्रेश करो, अभी आपको 2 टेबल दिखेंगे। ठीक है, सेम है ना? तो वो आपके ऊपर है, आपको चाहिए तो आप वो यूज़ कर सकते हो। नॉर्मली इसको ज़्यादा हम छेड़ते नहीं हैं। ठीक है, ओके, अब मुझे एक रिकॉर्ड इसमें इंसर्ट करना है, तो मैं इधर आ गया app.java में। ओके, इंसर्ट कौन सी क्वेरी है? DML क्वेरी है ना? तो DML क्वेरी को फायर करने के लिए हमेशा ट्रांजैक्शन यूज़ करना। क्या करना? ट्रांजैक्शन। तो बगैर ट्रांजैक्शन के DML क्वेरी नहीं दिख रहा है ट्रांजैक्शन। तो जो आपका सेशन है उसका बिगिन ट्रांजैक्शन कर देना। यहाँ देखो, तो ये क्या करना है आपने, एक बार आप सेशन बना लिया आपने, अब ये बन गया सेशन फैक्ट्री ना। फैक्ट्री मतलब क्या हो गया, आधा काम हो गया ना। तो कल हमने जो डिस्कस किया था, तो मैं अगर डायग्राम वापस ड्रॉ करूँ, सो इज़ माई पेंट स्क्रीन विजिबल टू ऑल? द पेंट स्क्रीन इज ओपनिंग, इज इट विजिबल नाउ? तो ये जावा प्रोग्राम है ब्लैक में, ये रेड में सेशन फैक्ट्री है, और ये ब्लू ग्रीन में जो है वो डेटाबेस है ना। ये 3 लेयर है और इसके अंदर फिर सेशंस होते हैं। क्या होते हैं? मल्टीपल सेशन होते हैं, जितने चाहो आप बना, पर वो अनवांटेड नहीं है तो मत बनाओ क्योंकि वो हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास रेड में क्या बन चुकी है, यहाँ तक हमारे पास क्या बन गया है, सेशन फैक्ट्री बन गया है ना। ये फैक्ट्री क्या है, सेशन फैक्ट्री है ना। तो फैक्ट्री तो हमारे पास बन गई है यहाँ पर। तो ये रेड वाला हमारा हो गया सेशन फैक्ट्री। अब सेशन फैक्ट्री यूज़ करके अपने को क्या बनाना है, सेशन बनाना है। ठीक है, सो लेट्स से इसका मैं नाम रखता हूँ सेशन 1। ये ब्लू वाले का नाम क्या रखता हूँ मैं, सेशन 1 नाम रखता हूँ। ठीक है, अब वो कैसे बनाते हैं, फैक्ट्री यूज़ करके, तो यहाँ लिखा होगा कोड के इसमें डॉक्यूमेंटेशन में लिख रहा है फैक्ट्री डॉट ओपन सेशन, और क्या नाम दिया उसको, सेशन, है ना। उसको कॉपी कर लो और अभी ये आपका
सेशन बन गया। फैक्ट्री तो ये तो हम जब चेक करने के लिए कर रहे थे, इसको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, कमेंट कर सकते हैं। सेशन को इंपोर्ट करो, सेशन भी इंपोर्ट हो गया। कहाँ से आया? ठीक है ना, हाइबरनेट सेशन से आया। अगर आप DML क्वेरी एग्जीक्यूट कर रहे हो तो ट्रांजैक्शन भी बनाओ। क्या बनाओ? जब आप क्या करना चाहते हो, DML क्वेरी बनाना चाहते हो, वो भी मैंने ले लिया और वो भी हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया। ठीक है, तो मैंने ये सेशन यूज़ करके ट्रांजेक्शन बनाया। इसको कंट्रोल शिफ्ट ओ करो, इसको भी कहाँ से लो? जी, हाइबरनेट ट्रांजैक्शन। ठीक है, सारा हाइबरनेट से आ रहा है। ओके, अब मुझे एक रिकॉर्ड स्टोर करना है। सो अब जो है मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया पहले। ठीक है, S1 इज़ न्यू स्टूडेंट। ओके, और उसको पास कर दिया मैंने 18, विराट और 78.5। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट में क्या करूँगा, इसको दे दूँगा ये ऑब्जेक्ट में सेशन। ठीक है, तो सेशन का ऑब्जेक्ट है मेरे पास, तो सेशन का फंक्शन है सेव, और उसको ये ऑब्जेक्ट पास कर देना। जैसे आप ये ऑब्जेक्ट सेशन को देते हैं, लेट से ये ऑब्जेक्ट का नोटेशन है हेक्सागन। ठीक है, तो सेशन की अपनी एक कैशे होती है। ये पर्पल का मैं जो कर रहा हूँ सेशन का कैशे है, तो वो ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा? सेशन के कैशे में स्टोर हो जाएगा। क्या क्या है उसके क्रेडेंशियल? एस रोल नंबर, एस नेम और परसेंटेज। ठीक है, और जो भी उसके वैल्यूज़ है वो यहाँ पर आ गए। ठीक है, जो भी इसका नाम है और 18, और सेशन क्या करेगा फिर? इसको मैप कर देगा एक रिलेशनल डेटाबेस रो से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रोल नंबर, एस नेम, परसेंटेज, और ये ऐसे एक्सपैंड हो गया और 78.5 ये हो जाएगा। ठीक है, तो उसका एक कॉपी सेशन कैशे के अंदर भी मिल जाएगा कोई ना कोई एड्रेस के ऊपर। ओके, और एक कॉपी किसमें रहेगा? ये डेटाबेस के अंदर भी रहेगा। ठीक है, सो और फिर आपने जो कि DML क्वेरी फायर किया है, तो ट्रांजैक्शन से इसको कमिट कर देना। तो ट्रांजैक्शन से हमेशा जब भी DML क्वेरी फायर हो, ट्रांजैक्शन को कमिट कर देना। So let's try to do this now. So let's create that object. क्योंकि वो अलग पैकेज में है, इसके लिए इंपोर्ट करना पड़ेगा। हमने अपना सेशन बना, तो लेट्स कॉल इट सेशन 1। ठीक है, आई कैन हैव मल्टीपल सेशन, नो। सो सेशन आई विल कॉल विच फंक्शन? सेव। और क्या पास कर देंगे उसको? और क्या कर देंगे? TX क्या कर देंगे? कमिट कर देंगे। ठीक है, अब ये सब हैवी ऑब्जेक्ट्स है, तो क्या करना है? सेशन को भी क्या करना, काम होने के बाद क्लोज कर देना। और फैक्ट्री को भी क्या कर देना? फैक्ट्री को भी क्लोज कर देना। ठीक है, अब आपको मैसेज दिखाना है यूज़र को, तो आप मैसेज दिखा सकते हैं यूज़र को, और इंसर्टेड। ओके, सो राइट क्लिक करके रन करके देखते हैं, तो देखो क्या होता है। ओके, मैं क्या करता हूँ, स्क्रैच से सो ठीक है, सो नाउ लेट्स रन दिस एंड चेक। So it will execute which query in the background? Insert query, right? So that query will reflect on the console. You will understand. See, it is doing. Okay. In which table? So let's go and check. If I refresh TY students table, one record has been inserted over here. Got it? Okay.
then now if I want to insert one more record, so I will run this again. Correct? So if I run this code, what will happen? So will that previous record be there, or will that be truncated table? This record will be there. Okay, if you want to drop that table at every run, then you have to come here and say DDL auto create. What this will do, at every run it will drop the table and recreate the table. So now if I run this code, what will happen? That my this table will be dropped and recreate, and it will have only one record, correct? If I set it to update, okay, I haven't run it yet. If I set it to update, then I will have two records. Yeah, so if I run this now, so see, you will see that it will not show any create command. It just show insert command over here. What it is showing, only direct insert command, means it has only inserted the record, right? So now I should have two records in my table. So you will see over here two records. This is refreshing. Refreshed. Now if I set that attribute GDL auto to create, if I save it, and next time if I try to run a record, now what do you think will happen? There will be only this record, it will recreate that. So what all command do you think it will show on the console? There will be a create command. No, first it should be show drop command. Drop command, then create command, then insert command. Yes. See, drop, create, and then insert. So now it will have only one record, correct? So if I click on this, refresh this table, it will have only one record. Previous data has been evaporated. Okay? Yes, sir. Yes, sir. So if you want to store multiple data one after the other, then it's a good idea that we keep update only, because if you keep it as create, at each run you will remove the entire table, so all your previous records will be lost. So update is a good option. Understood these properties now? Yes, sir. So we come here again now. Okay, so here I am inserting the roll number. What if I want the roll number to be auto increment? So what I will do is I will make a student class object using no args constructor, and I will only add the student one, right? And I will only set the name and I will only set the person. Have I set the roll number? No. So roll number should auto increment, right? Yes, sir. So for that, if you want, you can write over here @generated. So just type gen, okay, and here generated value, and control space bar strategy, control space bar identity. So this identity means auto increment. So now I will not provide any roll number. Roll number will be auto incremented. So here, okay, so I'll come back over here now, and I will use create, because I will fresh table will be created now, but auto increment. So if I right click over here and
save this. So what will be the roll number of this Alice? So if I want to save multiple records, student 2, and if I say Ben and 97.8, student 2, session 1 dot save student 1 and session 1 dot save student 2, and it is DML query, so we will do a commit. So now what all queries will reflect on the console? Drop query, create query, insert twice, right? Yes, sir. Insert twice. And what will be the roll number for that now? 1 and 2. It will auto increment the roll number. Got it? Yes, sir. So this also we can do. We can use auto increment also. Getting it? Yes, sir. How Hibernate works, ORM works. Now our responsibility is just to create the object and give it to the session. Session has some functions to do the database activities. So to insert, it has the save function. So right now when we save the object, one copy of this object is where? The Session cache, and a copy of it is also there in the database. Okay, so when we create an object using that new keyword, okay, that object is in the transient stage. So that object passes through various stages. Okay, so I have put a diagram over here at the end for you all. Okay, so it is first in the transient state. Which state? So when I have just created that object, okay, so when I write over here student S1 is new student, this object is where now? So transient state means no the session is aware of the object, nor the database. So in your transient state, nobody is aware of this object, correct? So in transient state, nobody is aware of this object. So I will just make a table over here. Which state? Transient. So session and database. Who is aware of this object in the transient state? Nobody. No, not. As I call save function, then from transient it goes to persistent state. Which state? Persistent state. So what happens in persistent state? Both are aware of the existence of the object, right? How do I put it in the persistent state? By calling the save method, and I pass that object over here, right? Whatever object is there, S1. So when I call the save function, that object enters into persistent state. So in persistent state, the session cache also is aware of it, and the database also is aware of it. Now I have, if I have many objects, okay, let's say my cache has overloaded, okay, so I have to evacuate the cache, okay, evacuate all the objects in that cache to make space. Okay, let's say my performance is reducing and I'm getting out of memory errors, so I want to evacuate all these objects from the cache. So I can do a session dot clear. What I can do, or if I close the session, then by default all the objects will be lost. So then what do I can do? I can either clear and, so if I clear
that, so I come here and on this object I call session dot clear. So means what? Session cache has been cleared. Yes, sir. Then it enters into detached state. Which state does it enter into? It enters into detached state. By how? Either I can close the, so if I close the cache, I have to open it again. If I close the session, then again I have to start it like I did over here. So what did we do in the session? We have to open again, right? So if I close, I have to again open the session. But if I clear means session is open, just memory is flushed. So two ways I have. I can say session dot close or session dot clear. So what will this do? Session dot clear will just Clear out all the the objects from the cache. inside the cache. But the data is there in the database, correct? Yes, sir. So when it goes into detached state means session, nothing is there, but the database contains that object. Yes, sir. Okay. Now let's come back to that state again. Let's go to the persistent state again now. So this object is there over here in the cache. So this is which state? Persistent state, Persistent state. right? And now on the persistent state, if I say remove, I say what? Or delete that object. So it goes into removed state. Which state? When I delete that object. So on the persistent state, if I call the delete method, which method? Delete method or remove method, it will go in which state? Remove state. Means that data will be removed from the database. Okay, so it's like delete query. Which query? And what does delete query do? It remove the data from the database. But the object is there in the memory. So in remove state, what happens? Session has the object. Session has the object and Database does not have the object. So these are called of states of object in Hibernate. So how many states? There are 4 states. Namely, Transient, persistent, detached, removed. transient, nobody is aware of the object existence. Only it is there in the Java program. Persistence, when I click on save, a copy is there in the session and a copy also there in the database. When I say detached, session is cleared, so it is not in the session but it is there in the database. And when I delete it from the database, it is deleted, but a copy is there in the session, right? Yes, sir. These are called states of the object in Hibernate. Hibernate. Okay, and you all know how to create the classes. And okay, if I want to make a column in the table which I want it in the class, let's say this is some temporary column I want for calculation, I want it in the class but I don't want it in the database, then you cannot add transient to this. Which annotation? So by making a transient means it will be there in the The session, the database will be available. yes, okay. And the static objects or data members also are not a part of the class, because static belongs to the see, we are mapping an object, right? And static doesn't belong to an object. Static belongs to a, so when I run this code, will these two columns be created in the database? No. Okay, so let's check it. So let's try to
keep it create again so that it drops the table and creates for fresh for us, because we have added some structural changes in the class. So let's say if it creates these two columns or not. This I am 100% sure this column will not be created, transient column. Let's check for the static also. So run and run, because it is ORM, no, object relational mapping. So it caters more to the object, and static doesn't belong to the object. Static belongs to the, see which column he has created. Okay, so it has not created that column. So let's go to TY and see. Okay, so transient and static columns are not created in the database. Okay, and now we will see one more way of creating an object. Have you all heard of the builder pattern? No, no. Okay, so today I will show you one more way in which we can make our code more cleaner and more simple. See, this is called as, yes, this is setter, getter, toString, right? So we write this in all the classes, and the problem with this is if I add any attribute, okay, so if I say double address of this student, then I have to make all the changes again. So delete this all args and make a new all args, add more setter getters, right? So if I go to Genesis, it will ask me for make a setter getter for address and make a change in the toString also. So now to overcome this problem of this is called boilerplate code, which is common code for everything. What we can do is there's a dependency called Lombok. Which dependency? Lombok. So you can go and search for Lombok dependency manual and add this dependency. Take the latest version, no problem. 1.18.42. Copy this. Okay, click on it, copy this, and put it in your application properties. In your form XML. So go to the form XML and add this. See, as of now, do you see any Lombok jar? No. So if I save this, see bottom right, it is downloading, and a jar will be added over here, Lombok somewhere. So once I add Lombok dependency, Lombok is a dependency which you have to add also and which you have to install also. Okay, just by adding will not make sense. You have to install. How to install it is very simple. Whatever this is there, right click on that dependency and copy the qualified name. First thing. Second, go to the window, go to show view and open a terminal. Okay, if it is not visible, you can search over here in other. You can search for it, terminal. Double click on the terminal. Okay, so such screen type icon will appear over here. Click on that. Local terminal is fine. Click on OK, and then just type java-jar shift insert whatever you have copied, or you can do a control V and hit enter. As you hit enter, okay, for me it is not showing, one small window will open up with a checkbox. Just check that box and click on install, and within a second it will install. Mine is not showing because my code is breaking over here. My code is breaking over here. See this. So I said never give a space between the names. So now I have to manually go cd.m2 cd.m2. Now I'm in .m2 over here. Then go to cd repository. Then go to cd org. Then go to cd project Lombok. Then go to cd Lombok. Right? So I'm taking, so those guys who are this, so go to cd Lombok.
that, then CD 1.8.14, Yes. Yes, sir. 40 to this one, and then I can do -jar and this file name. What is it? This one, right? Lombok Yes. -1 1.80. So now as I hit enter, you will see this box up, small pop-up will open. Okay, it is scanning for all the IDs you have, Eclipse, IntelliJ IDEA, VS Code, whatever you have. It is scanning over here, and then it will reflect which all IDs you have. Just check all the IDs and click on install. That's it. And then you have to restart your Eclipse. So whenever you're installing it, you have to restart Eclipse. Shut down the Eclipse and restart it. So it is scanning. Okay, so check this. Click on install. It will install within a second, and just install and quit. That's it you have to do. So I already installed it, so I will not try to install it again. I'll just quit installer. So those who are installing will have to then do what? Restart the Eclipse. And then once you restart the Eclipse, then you come to your entity class. And now, what is this? Yes? The Lombok constructor. So now I remove this no args constructor, and directly I have an annotation for that. And the order is not important for annotation. You can add any order. No args constructor. Got it? From Lombok. Yes, sir. You see? Yes, sir. Yes, sir. Which is this constructor? All of constructor. Remove it and add a dependency. Okay. What are these? Yes, sir. Getters and setters. So @getter control spacebar from Lombok, @setter control spacebar from Lombok. And what is this? ToString @toast. So this has made the code much more. Now the code looks much more clean and complete, right? Now if you keep on adding the variables which you want to add, directly they will be added in the database also, in the toString also, and constructor, everything will be added. Don't need to add manually. Yes. So now the constructor, which are the 3 parameters, constructor will be set to 4 parameters. Yes. This is which dependency? Lombok dependency. Lombok dependency. Okay. Then you can add one more to it, add builder. If you want to use builder pattern to get objects, so builder from Lombok. Now if the class which you have added builder, so if a class, let's say, contains 10 properties, okay, let's say it has lots of other properties also, string and then double, weight. So if I was using constructor, if I want to create an object with only these 2 things, name and percentage, then I have to have a constructor for that exclusively, right? But I can create object with any other permutation. I can make an object only with sname and with weight also. So then I would need a constructor for these 2 only separately, right? So if I have 5, then 5 factorial, I would need 120 constructors, because I can use any permutation to create the object, right? So that is where your builder pattern will come into play. So the class, just add builder. Now to create an object of this builder class, what you can do is, so now if I want to create an object of this with only what? Name and percentage, right? So I can do like this: student 2 equals to student.builder. It's a static method. So directly you can call with the class name. And now just give dot and what all attributes you want. So you want to say sname, okay, Chris dot percentage 98.6, and then just give dot build. So it will create an object using these. I will give it to you. Yes, sir.
No need to add all these extra. So even though it has so many properties, but I am making the object only using these two attributes, sname and percentage. So this is what your builder pattern does. So you can create the object with, so what you should have setter getter for these, okay? You should have setters for these. The builder pattern, it works with the setters. So it is mostly using the setters over here to read. Getting it? Lombok. Yes, sir. Yeah, so you all can use Yes, these in your applications to create.